इन दनांग। अभी मैं थोड़ा स्विमिंग करने आया था। मेरे होटल के रूफटॉप पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सो अभी आज का प्लान है, मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा होय आन सिटी। जिस चीज़ के लिए मैंने पूरी ये ट्रिप प्लान की थी, मैड मंकी हॉस्टल एक बहुत ही फेमस हॉस्टल चेन है, जिसके बहुत सारे ब्रांचेज़ है बैंकॉक में, फिलीपींस में। सो उनका एक न्यू ब्रांच ओपन हुआ है होय आन में, तो वहाँ मैं रहने जाऊँगा। This is not the first time I've stayed in the hostel once in Singapore, but that was with my friends. So this is my first solo trip जहाँ पे मैं अकेला रहूँगा सब strangers के साथ. So I wanted to have that experience once in life. So let's see how it goes. अभी चेक करना है मुझे टैक्सीज यहाँ से क्या रेंट है। तो चेकआउट कर लिया मैंने होटल से और मैं अभी जा रहा हूँ खाना खाने। मेरा टैक्सी एक्चुअली ऑलरेडी आ गया है, बट बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मैंने सोचा यहीं पे खाना खा के जाऊँगा होय आन, जो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तो लग जाएंगे मेरे हिसाब से। लेट्स सी, आई एम लुकिंग फॉर एन इंडियन रेस्टोरेंट। अगर नहीं मिला तो फिर वियतनामीज़ या थाई खा के निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो ये आ गया मेरा टैक्सी जो मैंने बुक किया है। तनांग से होय आन पहुंचने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है, बट रोड्स आर गुड, व्यू इज़ ब्यूटीफुल। आपको बहुत सारे रिवर्स और राइस फील्ड्स दिखेंगे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी था ये मेरा। छोटे छोटे गांव है बीच बीच में, सो इतना डेवलप नहीं है ये अभी तक के। अभी मैं जस्ट पहुंच गया हूँ होय आन सिटी में, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये जो है एक एंशिएंट वियतनामीज टाउन है। तो आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत बढ़िया है। उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए यहाँ पे। ये एकदम ओल्ड टाउन है। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं बहुत पुराने ज़माने की जो होती है, वैसे घर है यहाँ पे सब। तो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊँगा जो यहाँ मैंने प्लान किया है कुछ प्लेसेस विज़िट करने का। अराउंड 3 दिन हूँ मैं यहाँ पे। सो लेट्स सी हाउ इज़ द होय आन सिटी। So I have reached at Mad Monkey Hoi An Hostel. It seems this has been, it was a different hostel chain before, and it has been taken over by Mad Monkey hostel chain. So थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है यहाँ पे। सो ये है मेरे मैड मंकी हॉस्टल का कमरा। 6th बेड है, 6 लोग हैं यहाँ पे। फ़िलहाल तो कोई है नहीं रूम में। दिस इज़ माई बेड। ये नीचे या उन्होंने लॉकर्स दिए हुए, आपको आपका ताला लगाना है सामान डाल के। अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ है तो आपको जमा कर देना डिपॉजिट वो। सो इट्स क्वाइट गुड। सो ये कॉरिडोर है एंड दिस इज़ द कॉमन टॉयलेट एंड वॉशरूम टू गेट फ्रेश। Sitting area. This is the backyard. So अभी थोड़ा नीचे आया हूँ मैं रिसेप्शन एरिया में, जस्ट टू चेक आउट द इवेंट्स। जी हाँ, यहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं हर रोज़ में। तो आई एम जस्ट चेकिंग आउट कौन से इवेंट क्लासेस या टूर्स में ज्वाइन कर सकता हूँ। This is the common bar area. Rates are quite cheaper. I'm surprised, but it's good that you don't need to go out anywhere to eat breakfast and stuff.
You can just enjoy near the reception area in this bar. You can see the rates in the menu card. When the beer, the liquor is cheaper. So my prime reason to stay in a hostel is to interact with people from around the world. So यहाँ से बहुत लोगों से मुलाकात हुई मेरी. I've heard their life stories. ऐसे कन्वर्सेशंस हुए जो हमने कभी भी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी नहीं किए. So most of the travelers जो यहाँ पे थे वो solo travelers थे. So sometimes it happens you cannot share your life or what's going on in your life with your close friends, but you can open up in front of a stranger as you know they are not going to judge. Hoi An is a village, so everything shuts down by 10 o'clock. Even the events at the hostel used to get closed at 10 p.m. So we used to move to a Tiger pub, which is the only pub in Hoi An where you can have fun till 3 a.m. Day 2 was Vietnamese festival event जहाँ पे हमें राइस लेकर दिया गया था as rice is the major production in Vietnam. कुछ वियतनाम खाना था जो हमें सर्व किया गया था. They taught us how to raise a toast Vietnamese way. So it was a quite good fun event at Mad Monkey Hostel. सो ये हमारा हर रोज़ का एक रूटीन हो गया था. जैसे इवेंट्स ख़त्म होते थे हॉस्टल में हम लोग निकल पड़ते थे टाइगर पब जाने के लिए. सो मेरे साथ कुछ दोस्त थे मेरे जो यहाँ पे ही मुझे मिले थे. रोज़ रात को हम लोग निकल पड़ते थे यहाँ पे. एक टैक्सी पकड़ते थे या फिर कुछ बाइक लेके. ये टाइम हमारे टैक्सी ड्राइवर ने हमें एक्चुअली गलत लोकेशन पे छोड़ दिया. सो हम लोग थोड़ा चलते बियर पीते चले गए. Another easy one. What is the name of the largest religious temple in Southeast Asia? What is the name of the largest religious temple in Southeast Asia? I must say the idea of Mad Monkey to bring people together by conducting such events was great success. So this is how I spent my last night in Hoi An city. अगले व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा how I spent my days in Hoi An city. जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन थे मैंने विज़िट किए वो आपको देखने मिलेंगे अगले व्लॉग में. So stay